Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to online classes of Iqra Fast by Secondary Schools, our project of Iqra Education System. Dear students, in the last video lectures, we discussed about keywords with their English and Urdu meanings, and then I explained to you the poem, "The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world." Today in this video lecture, I will take you through question answers of this chapter number 14. These question answers are not given in your book, but in examination, question answers are an integral part of your paper. There are more or less 3 to 4 questions which we will cover today in this video lecture along with a reference to context. The first question written on the board before you is, how can we say that the credit of all achievements goes to the mother? हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी सारी कामयाबियों का क्रेडिट हमारी मां को जाता है? I want you people to answer me this question first. आप इसका जवाब दीजिए कैसे? देखिए, क्रेडिट तो हमारी मां को जाता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना, लेकिन क्यों जाता है? जी, आपसे सवाल है ये। Yes, I heard somebody say it. मैंने सुना किसी ने जवाब दिया, क्योंकि हमारी वालदा हमारी परवरिश करती हैं और हमारी वालदा हमारी पहली तरबियत गाह है। हम जो कुछ भी हैं अपनी वालदा की वजह से, अपनी माँ की वजह से हैं। हमारी वालदा हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाती हैं, फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें तालीम और तरबियत का सिलसिला हमारा शुरू होता है, और उसके बाद हमें अदब और आदाब सिखाती हैं। अलगर्ज ये कि हम बड़े जवान हो जाते हैं, फिर भी हमारी वालदा हमारी तरबियत करती रहती हैं गाहे बगाहे। यही वजह है कि हमारी जितनी भी कामयाबियां हैं, हम अपनी ज़िंदगी में जितनी भी कामयाबियां हासिल करते हैं, वो वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी वालदा की वजह से है। Let's write the answer. I'm writing it on the board here. You may copy it down. You have to keep your registers open with me. You have to give or mention English and Islamic dates first of all. Everybody, take out your registers and do this work with me. I'm waiting for you people to take out your registers. Yes, now mentioned English and Islamic dates on the top of your register and draw 2 margin lines, one on the left hand side and one on the right hand side of each page. हर पेज के उल्टी तरफ और सीधी तरफ मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें, और ये मार्जिन लाइंस ½ इंच की होंगी। अंदाजन इसको आप पहली मर्तबा चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लें, मेजर कर लें कि ½ इंच कितना होता है, उसके बाद आप अंदाजन मार्जिन लाइंस ड्रॉ कर लिया करें। दोनों तरफ, पेज के दोनों तरफ मार्जिन लाइंस ड्रॉ होंगी। डेट्स लाजमी मेंशन करेंगे, बगैर डेट्स के और बगैर मार्जिन लाइंस के कोई काम शुरू नहीं होगा। I've always told you people, even in the classes, that you always have to start your work after mentioning your English and Islamic dates and drawing 2 margin lines, one on the left hand side and one on the right hand side. Without doing these 2 things, you are not going to start your work. You understand? Okay, draw the margin lines. I see that some people have drawn the margin lines in the register, but a couple of students have not mentioned the dates. Yes, first mention the date and then give this heading. As you already have made title page, आपने पहले ही टाइटल पेज या टाइटल इसका लिखा हुआ है जब हम वर्ड फिलिंग कर रहे थे, तो आपको दोबारा से चैप्टर नंबर 14 पोम द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडिट इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, ये सब कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालिए, और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि आप मेरे ऑपोजिट कलर यूज करेंगे। जो चीज मैं ब्लू से लिखूंगा आपको ब्लैक से लिखेंगे, जो मैं ब्लैक से लिखूंगा आपको ब्लू से लिखेंगे। वक्तन फवक्तन मैं आपको रिमाइंड कराता रहूंगा। I will keep reminding you that you people have to use the opposite color when writing in the register. आपको ऑपोजिट कलर्स यूज करने हैं। तो ये सारी हेडिंग्स जो है ये
क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग भी ब्लैक से होगी। फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन आंसर की हेडिंग आपने ब्लैक से लिखी, and from the second line you will write 1, which means question number 1, and you will write this question: how can we say that the credit of all achievements goes to the mother? जी, ये लिखने के बाद आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए। जब तक आप ये क्वेश्चन राइट डाउन कर रहे हैं, आई विल राइट डाउन द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, हियर यू आर विद द आंसर। The mother is the first one who guides her children. She trains and educates her children. The lap of the mother is the first institution for every successful person. Hence, the credit of every achievement goes to the mother. जो हमने आंसर लिखने से पहले बात डिस्कस की थी, वही बात यहाँ पर आंसर में लिखी हुई है कि माँ वो पहली शख्सियत होती है जो अपने बच्चों की रहनुमाई करती है। वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को तरबियत देती है और तालीम देती है। माँ की गोद, द लैप ऑफ द मदर, माँ की गोद इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, पहली दरसगाह है फॉर एवरी सक्सेसफुल पर्सन, हर कामयाब शख्स के लिए। आप देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब हैं, चाहे आप उसको दुनियावी कामयाबी का नाम दें। इनफैक्ट कामयाबी ये नहीं कि आपके पास बैंक बैलेंस है, दौलत है, बड़ा घर है, बंगला है, गाड़ियां हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा कारोबार है। बहरहाल लेकिन ये कंटेम्प्रेरी सक्सेस, अगर हम इसको कहें कि आरजी कामयाबी जो है हमारी, अगर इसको हम इससे रिप्रेजेंट भी करें, तो अगर आपको दिख रहा है अपने ग्राफ में कि कई लोग ऐसे हैं जो ये आरजी कामयाबी, बैंक बैलेंस, दौलत, नौकर चाकर, घर बार और ये गाड़ियां, अच्छा कारोबार इनके पास ये, तो इन सब के पीछे पहली दरसगाह कौन सी थी? माँ की गोद। चुनाचे, hence चुनाचे, the credit of every achievement goes to the mother। आपकी हर कामयाबी का क्रेडिट आपकी मदर को जाता है। I will now write down question number 2 on the board. Meanwhile, you may write down this answer in your register. Mind this thing, students, you have to write question with black and answer with blue. So meanwhile you are writing down the answer, you may pause the video here and write down this answer, and I will write down the next question. The next question is, why does the poet compare mother's hand to rainbow? William Ross Wallace, the poet of this poem, The Hand That Rocks the Cradle is the Hand That Rules the World, is comparing mother's hand to rainbow in one couplet. एक शेर में, इस पोम के एक शेर में शायर विलियम रॉस वैलेस ने माँ के हाथ को रेनबो से तशबीह दी है, कंपेयर किया है। क्यों किया है? If you remember my explanation yesterday in the last video lecture, I told you people कि माँ के हाथ को रेनबो से तशबीह क्यों दी गई है। I want you people to answer me this question first. जी मुझे सोच के बताइए, कुछ आपको अगर याद आ रहा है मेरी एक्सप्लेनेशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। माँ के हाथ को रेनबो से तशबीह देने का मकसद यह है शायर का, चूंकि रेनबो इज अ साइन ऑफ पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड सेरेनिटी आफ्टर अ हैवी रेनफॉल। शदीद या तेज बारिश के बाद रेनबो इस बात की अलामत है कि बारिश थम चुकी है। जब तक बारिश हो रही होती है रेनबो नहीं अपीयर होता, जब बारिश रुक जाती है तो फिर रेनबो अपीयर होता है। और इसके अपीयर होने की निशानी क्या है? ये किस बात की अलामत है कि अब बारिश थम चुकी है, यानी कि अब हर तरफ पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, सेरेनिटी है। एक्सक्यूज मी। तो इसीलिए माँ के हाथ को भी शायर कहता है कि एक रेनबो की तरह है, कि जब माँ का हाथ हमारे सर पर होता है तो इसका मतलब कि अब हम सारी मुश्किलात, परेशानियों से महफूज हैं। ठीक है, इसी बात को हम आंसर में लिख देते हैं। यू मे पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन। मीनवाइल आई विल राइट डाउन द आंसर।
Here you are. Answer to question number 2. Why does the poet compare mother's hand to rainbow? Rainbow appears in the sky after rainstorms. It is thus a sign that the storm has passed and the trouble is over. The poet compares mother's hand to a rainbow because she protects her children from all troubles and sufferings. Rainbow किसी भी रेन स्टॉर्म यानी कि बहुत तेज बारिश के बाद नमोदार होता है, अपेयर होता है, और ये अलामत होता है कि स्टॉर्म थम चुका है और मुश्किल ख़त्म हो चुकी है। तो इसी वजह से पोएट माँ के हाथ को रेनबो से तशबीह दे रहा है कि क्योंकि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ऑल ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात, परेशानियों, रंज और अलम से। I hope you have understood this answer to question number 2. You may write down this answer after pausing this video here. Meanwhile, I will write down question number 3 on the board. Question number 3 is, why does the poet say that the prayers of mother on earth mingles with that in heaven? पोएट ने इस पोम में ये बात क्यों की कि जब माँ ज़मीन पर इस दुनिया में अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो जन्नत के फरिश्ते भी, आसमान के फरिश्ते भी उस शख्स के लिए दुआ करते हैं। You may write down this question in your registers. Meanwhile, I will write down the answer. But before that, tell me why. Why does the poet say that? क्यों शायर ऐसा कह रहा है? माँ की दुआएं फरिश्तों की दुआओं से क्यों मिल जाती हैं? फरिश्ते भी उसके लिए क्यों दुआ करते हैं जिसके लिए माँ दुआ करती है, यानी कि अपनी औलाद के लिए? जी सोच के बताएं। मैंने एक्सप्लेन किया था जब मैं पोम को एक्सप्लेन कर रहा था। यस एग्जैक्टली, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माँ की दुआओं में इतना असर रखा है कि माँ की दुआ अर्श तक पहुँचती है। जब माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो माँ की दुआ अर्श तक पहुँचती है, और फरिश्ते भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरमाते हैं, कहते हैं कि ए अल्लाह, तूने जो रहमत इस दुनिया में उतारी है वो रहमत आज तुझसे सवाल कर रही है, तुझसे दुआ कर रही है अपनी औलाद के लिए। हम भी तुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तू उस माँ की दुआओं को कबूल कर ले। ये वजह है। आई विल राइट इट डाउन as an answer here on the board. Meanwhile, you may write down the question. Answer to question number 3. Why does the poet say that the prayers of mother on earth mingles with that in heaven? The answer is, the prayers of mothers saged in the world mingle with the prayers saged by the angels in heaven, because mothers always pray for their children. माएँ हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ ही करती हैं। कभी कभी हम अपनी वालदा से मिसबिहेव भी कर जाते हैं, उनका दिल भी दुखा जाते हैं, कभी कभी हम थोड़ी सी बदतमीज़ी कर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सब बदतमीज़ियों के बावजूद हमारी माँ कभी हमारे लिए बद्दुआ नहीं करती, हमेशा हमारे लिए दुआ ही करती हैं। कह रहे हैं, शायर कहते हैं, वी शुड ऑल्सो प्रे फॉर मदर्स, हमें भी अपनी माओ के लिए दुआ करनी चाहिए। एज इट इज़ लाइक्ड एंड आंसर्ड बाय द एंजल्स इन हेवन, क्योंकि माँ की दुआएं भी और माँ के लिए की गई दुआएं भी फरिश्ते सुनते हैं और अल्लाह तक पहुँचाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक कि या अल्लाह पाक, इस माँ ने अपनी औलाद के लिए जो दुआएं मांगी हैं उन्हें भी कबूल फरमा, और ये जो औलाद अपनी माँ के लिए दुआएं मांग रही है इन दुआओं को भी कबूल फरमा। आई होप इट वॉज अ गुड सेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स on chapter number 14 poem, The Hand That Rocks the Cradle is the Hand That Rules the World. There are only 3 questions, and these 3 questions are normally asked in your exams, so you must go through these 3 questions today. I am giving you a home assignment on the board. Look at it. Here you are. Memorize question answers. There are only 3 questions. सिर्फ 3 questions है बेटे।
आप लोग साथ साथ ये काम करते भी रहेंगे। रजिस्टर में आप लोगों ने ये काम कर लिया होगा। आप अभी इस वक्त वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अपने रजिस्टर्स में लिख लें। ये काम साथ साथ करते रहें ताकि आपका रजिस्टर मेंटेन होता रहे, आपका क्लास वर्क और होमवर्क दोनों मेंटेन होते रहें। किसी भी काम को छोड़िएगा मत। जिस वक्त वीडियो देखें उसी वक्त इस काम को कर लीजिए, वरना ये काम पाइलअप होता रहेगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। बाद में बहुत सारे काम को करना मुश्किल हो जाता है और नतीजा ये निकलता है कि आपके रजिस्टर्स में काम इनकम्प्लीट होता है या अनडन होता है, विच इज़ वेरी बैड फॉर यू। एग्ज़ाम्स में जब आप तैयारी करने के लिए बैठेंगे तो इस वक्त जो आप काम कर रहे होंगे, रजिस्टर में मेंटेन कर रहे होंगे, ये आपको उस वक्त बहुत काम आएगा, क्योंकि जो काम आप फ़ौरन कर लेते हैं वो कहीं जहन में रह जाता है, रुक जाता है। लेकिन आज आपने ये काम किया, 4 महीने 6 महीने के बाद आप जब इसको याद करने के लिए बैठेंगे तो आपको आपके सामने बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आरटीसीज होंगे और दूसरी भी चीज़ें हैं। कॉम्पोजिशन का एक बहुत बड़ा एरिया है आपका, तो उस वक्त को याद रखना और याद करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो व्हाट माय सजेशन इज़ फॉर यू टू गो थ्रू all that work which you are doing in the class and do that work in your register, and whatever home assignment I'm giving you, either it is to write down or to memorize, you have to do it along with your classwork. That will reap a fruit for you in the end, and you will obviously be very happy and you will feel comfortable preparing yourself for your final examination of board. We will meet again inshallah in the next video lecture with reference to context on this chapter. अगली वीडियो सेशन में इंशाल्लाह हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को कवर करेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।